Hello friends, in this video we will talk about Einstein's theory of photoelectric effect. Einstein's theory of photoelectric effect. In which year the theory was given? It was given in the year 1905. And in which in which year the theory was approved? It was approved in 1911. And in which year he was awarded Nobel Prize for this? So that was the year 1921. So एक काफ़ी बड़ा time है, about a gap of 16 years that the world took to appreciate the person knowledge, to appreciate the theory he has given. Okay, now what is the basis of Einstein's theory of photoelectric effect? So it is based upon Planck's quantum theory. Now Planck's quantum theory is at that time it was a breakthrough in physics. We have studied about mass, length and time. According to the theory of Max Planck, time is variable, mass is variable, length is variable. That means if you start moving with some speed, the length will change. If you start moving at very large speed, the mass will change, even the time will change. यानी कि अगर आप बहुत ज़ोर से अपनी चलते हैं या अपनी स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं तो आपका मास, लेंथ और आपके लिए जो टाइम चल रहा है उन तीनों में भी चेंजेस आ जाएंगे. दिस वाज दी क्वांटम थियरी. ठीक है. इसके अलावा उन्होंने एक चीज़ और कही थी कि पूरी दुनिया में जो टाइम होता है वो भी क्वांटाइज होता है, मास भी क्वांटाइज होता है और डिस्टेंस भी क्वांटाइज होता है. एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स एग्जिस्ट्स in a fixed quantity. There is a smallest unit of time, उससे छोटा टाइम एग्जिस्ट नहीं करता. There is a very small unit of length, उससे छोटी लेंथ एग्जिस्ट नहीं करती, उसको बोलते हैं प्लांक्स लेंथ. और एक छोटा मास का भी एक सबसे छोटे से छोटा एक नंबर है, उस नंबर से छोटा मास आपको दुनिया में मिल नहीं सकता. That was the basis of Planck's theory. तो कुछ लोग सोचने लगे कि ये बिल्कुल एक वीडियो गेम जैसा है. If you play a video game, तो आप उसे कितना भी रिजॉल्व करके देखें, ओके, एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा यू कैन नॉट रिजॉल्व. इन द सेम वे आवर यूनिवर्स इज ऑल्सो लाइक ए वीडियो गेम. सपोज me and you, we are characters of that video game. And one more thing, in this year when this theory was approved and it was appreciated and it was given Nobel Prize, then at that time colored camera did not exist. Now you understand. Okay, let us see what exactly the theory is. तो अपन शुरू करते हैं यहाँ से, इस बलून से. According to the Einstein's quantum theory, based upon Planck's quantum theory, the explanation of photoelectric effect is given in very simple manner. उसने कुछ नहीं बताया, सिर्फ 2 और 2 4 होते हैं ये बताया. अब ये 2 और 2 4 बताने के लिए किसी को नोबेल प्राइज मिल जाता है, लेकिन ये बताने के लिए एक्चुअली में बहुत ज़्यादा लॉजिक से गुजरना पड़ा. You have to be highly logical if you want to simple explain 2 plus 2 is equals to 4. You can see in this the first equation h nu. What is this h nu? It is the total energy of photon. Okay, what is W0? W0 is the work function. Work function, you know what is? The minimum energy required by an electron to jump out of metal surface. And different metals have got different electron affinity. They have got different electronegativity. So they have different work function also. Okay, so this energy is divided into 2 parts. The first part becomes the work function. The second parts become the kinetic energy of the electron which has been ejected. जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया है, बाकी एनर्जी को अपनी काइनेटिक एनर्जी में बदल के आगे चल जाता है. Okay, now the same thing can be written in this manner also. H nu is equals to H nu 0 plus kinetic energy. अब ये nu की जगह यहाँ पे W0 की जगह H nu 0 क्यों लिख दिया? Why? Because what is W0? Work function. What is nu 0? Nu 0 is the threshold frequency. यानी इस frequency से कम वाली अगर आप electromagnetic waves डालेंगे मेटल के surface के ऊपर तो कोई emission नहीं होगा. The surface might get heated. There may be some other things that might be going on, but photoelectric effect will not take place. Okay, that particular frequency is known as the threshold frequency. Now in the next equation instead of Ke I have written EV0. Okay, अब ये काइनेटिक एनर्जी की जगह EV0 क्यों लिख दिया? भाई ये भी एनर्जी है और ये भी एनर्जी है. किस चीज की? इलेक्ट्रॉन्स की.
तो यहां से के ई की जगह ई वी जीरो लिखने की वजह यह है बिकॉज फर्स्ट थिंग वी आर डीलिंग विद इलेक्ट्रॉन्स एंड वी हैव टू डिस्क्राइब द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Energy of electrons is given in terms of electron volt. So I have written over here as electron volt. And V0 is what? V0 is the stopping potential. पहले वीडियोस देखे होंगे, आपको पता चला होगा that what is exactly the stopping potential. ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? EV0. अब एक इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए एग्जैक्टली कितनी एनर्जी चाहिए? जितनी उसके पास काइनेटिक एनर्जी है एग्जैक्टली उतनी नेगेटिव एनर्जी आप उसे प्रोवाइड करा दो, इलेक्ट्रॉन विल स्टॉप. सो दिस स्टॉपिंग एनर्जी एंड दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी सेम. ओके, ये तीनों इक्वेशंस आप दिमाग में रखें. कई बार आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा, कई बार प्लैंक्स कांस्टेंट, कई बार थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कई बार फ्रीक्वेंसी. So this should be floating in your mind when you are doing the questions of photoelectric effect. Okay, this was the theory given by Albert Einstein, the explanation. Now this was not the only thing that was given. बहुत सारी चीजें थी इसमें. अब दूसरी चीज पे आ जाते हैं, एनर्जी ऑफ लाइट. क्लासिकल थियरी जो आइंस्टाइन के आने से पहले जो थियरीज हमारे पास में थी, दैट वाज गिवन बाय क्रिश्चियन आइगन्स एंड कौन था, ऑयस्टेड वगैरह था. तो उन्होंने क्या कहा था, दैट लाइट इज ए वेव, लाइट इज नॉट ए पार्टिकल, लाइट इज नॉट ए रे. व्हाट इज लाइट? लाइट इज ए वेव. बट आइंस्टाइन चैलेंज्ड दिस. उसने चैलेंज किया कि ठीक है, वेव थियरी सही होगी अगर आप इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो. वेव थियरी इज करेक्ट इफ यू आर डीलिंग विद डाइफ्रैक्शन. Wave theory might be correct when you are calculating the resolving powers of microscope, telescope, lens, चश्मे वगैरह सब बना रहे हो तो wave theory आपकी सही है. But when you come to explanation of three things, especially photoelectric effect, Compton effect and Raman effect, these three effects can only be explained if you take light as a particle. Okay, so if we take light as a particle, then what will be the energy of that light? तो क्लासिकल थियरी ये बोला था कि इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज मोर, द एनर्जी ऑफ लाइट इज मोर. बट इन पार्टिकल थियरी ऑफ लाइट, दिस न्यू थिंग हैज कम अप. दिस सेज दैट इफ द फ्रीक्वेंसी इज मोर देन द एनर्जी इज मोर. दैट मीन्स एनर्जी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, नॉट ऑन एम्पलीट्यूड, नॉट ऑन स्पीड. ओके, नाउ the second thing that was explained, that was work function, that every metal has got different threshold frequency, every metal has got different work function. Why? Because different metals have different electrochemical properties. सबकी electrochemical properties अलग अलग होती हैं, इसलिए सबकी threshold frequency और work function भी अलग अलग होगा. Alright, this point is quite simple to understand. Now, what the next thing was said, that it is a one-on-one match. Electron और photon की जब भिड़ंत होती है, when they fight, or say that electron absorbs a photon, that is a one-on-one match. That means at a given time, one electron can absorb only one photon. ऐसा नहीं होता कि एक साथ वो दो photons को खा ले. ठीक है, एक एक करके दो को खा सकता है, लेकिन पहले एक को खाएगा उसके बाद दूसरे को खाएगा. सो इट इज वन ऑन वन. व्हाट द इलेक्ट्रॉन फोटोन कॉलिजन और इलेक्ट्रॉन फोटोन एब्जॉर्प्शन इज एन वन ऑन वन इंसिडेंट, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी फास्ट. ये वन ऑन वन होता है इसीलिए बहुत फास्ट होता है. आपको पता है टाइम कितना लगता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में? 10 to the power -9 seconds. ओके, इफ इट वुड हैव बीन ए 2-on-1, अगर एक इलेक्ट्रॉन दो फोटोन्स या 3-4 फोटोन्स के साथ में मिलके फिर बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करता तो इस इंसिडेंट को होने में ज्यादा टाइम लगता. बट बिकॉज इट इज ओनली 1-to-1 इंटरैक्शन, इट इज टेकिंग वेरी स्मॉल टाइम. तो आइंस्टाइन ने यह भी बताया जो क्लासिकल थियरी हमें नहीं बता पाई थी. ओके, देन दिस थिंग, ऑल एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डोंट हैव द सेम एनर्जी. All emitted electrons don't have the same energy, right? मतलब क्या हुआ? मतलब this is a metal surface and from here you are throwing light. The electrons will come out. Okay, now all the light that was given to the metal surface, all the photons that were going to the metal surface, they were all having same energy, they were all having equal energy.
but the electrons that are emitted out, some will have energy of 3 electron volt, some will have energy of 3.5 electron volt, and some will have energy of 4.1 electron volt, and so on. Okay, why this thing happens? Why this thing happens? This thing happens because of the fact of the status of electrons before the photoelectric emission. ठीक है, ये सबकी एनर्जी अलग अलग क्यों है? क्यों? इसलिए है बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होने से पहले क्या था? सपोज ये इलेक्ट्रॉन जो था ये पहले ऐसे था और ये क्या था? ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन था. व्हाट वाज इट? It was a free electron. It was not bonded to any atom or molecule. So very small energy was required for its ejection, and so it was coming out like this. Okay, ये वाला नहीं, ये वाला, इसको जाने के लिए मिनिमम एनर्जी लगी है ना. The energy is 4.1 electron volt. That means this was initially before the electron photon collision. It was a free electron, and free electrons have least bonding. इनके लिए bonding सबसे ढीली होती है. They are not part of any atom or any molecule. So ये बड़े कम एनर्जी में नॉक आउट हो जाते हैं. Okay, so the energy of photon was given to this electron. थोड़ी सी एनर्जी लेके ये बाहर चला गया तो उसके पास ज्यादा एनर्जी का स्टोर बच गया, and that energy became the kinetic energy of electron. Coming to this electron, before the photoelectric effect, it was bonded to some nucleus. Okay, ये किसी एटम के अंदर बॉन्डेड था. ये मैंने क्या बनाया? ये एक एटम बनाया, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ था? ये पहले इस ऑर्बिट में घूम रहा था. फोटोन आया, धड़ाम से इससे टकराया, there was a collision, and because it was a bonded atom, more energy was required to knock it out. So the total energy that was given to this electron, it was divided into two parts. First part, the energy of knocking out. Second part, the energy becoming kinetic energy. अभी इसकी kinetic energy कम है, यानी इसको यहाँ से निकालने में ज़्यादा मेहनत लगी. Obviously, if the electron is free, you require less energy to knock it off. If it is bonded, you require more energy to knock it off, so it is having less kinetic energy. अभी इसका क्या हाल है? This was in the inner shell of the atom. ये कहाँ पे था? ये काइनेटिक एनर्जी इसकी और भी कम है, यानी इसको निकालने में सबसे ज्यादा मेहनत लगी है. क्यों लगी है? ज्यादा एनर्जी खर्च क्यों हुई है? बिकॉज इनिशियली इट वॉज नीदर ए फ्री इलेक्ट्रॉन nor it was in the outermost orbit, it was in the inner orbit. ये बहुत अंदर था, न्यूक्लियस के एकदम पास में था, तो न्यूक्लियस इसे आसानी से छोड़ेगा नहीं. You will have to spend more energy to knock it out. So more energy is required to knock it out, less energy is left with that electron, and so its kinetic energy is also less. Okay, this explanation, this beautiful explanation was also given by Albert Einstein. Now the last thing about this theory, मिलिकन्स अप्रूवल. मिलिकन उस टाइम पे एक बहुत बड़ा नाम था फिजिक्स के फील्ड में. एंड व्हाट मिलिकन वाज ट्राइंग टू डू, मिलिकन ने आइंस्टाइन की थियरी से ही वाज नॉट बिलीविंग. बोले यार ये थियरी गलत है यार, अब वेव थियरी ही सही है एंड योर थियरी इज रॉन्ग. सो ही वाज ट्राइंग टू प्रूव अल्बर्ट आइंस्टाइन रॉन्ग, and he did some oil drops experiment. उसने एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया जिसको बोलते हैं मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. तो उस को जब ये कर रहा था, क्यों कर रहा था? बिकॉज ही वांटेड टू प्रूव अल्बर्ट आइंस्टाइन इज रॉन्ग. लेकिन उसी एक्सपेरिमेंट से वो उसका सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट बन गया. ओके, और उसी एक्सपेरिमेंट से ये भी अल्टीमेटली जो बात सामने निकल के आई, द कंक्लूजन ऑफ मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट वाज दैट Einstein's photoelectric theory or quantum theory is the correct theory. Okay, whatever discussion I have done in this video, they will be all part of 1 mark question or 2 marks question.